This हब conference will now be recorded. अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं. So Docker Hub क्या है? The Docker Hub is a repository of Docker. Like this is a Docker Hub, and this is a base machine. Either you use a base machine in a cloud or either anywhere. This is your base machine, or in this machine you can install a Docker engine. और आपको इस बेस मशीन पे इंस्टॉल करना है आपका डॉकर engine, and now with the help of Docker engine, Docker engine create container. When you create container, the Docker engine pull image from Docker engine pull custom image from Docker Hub and download and save in Docker engine machine and create containers. तो गैस सिंपल सा है. व्हेन यू क्रिएट एनी कंटेनर, अगर आप कोई भी कंटेनर क्रिएट करते हो डॉकर इंजन की हेल्प से, तो डॉकर इंजन क्या करेगा? द डॉकर हब के अंदर आपकी होती है कस्टम इमेजेस. यानी कि डेवलपर से आप जो भी इमेजेस बनवाएंगे वो सारी इमेजेस आप कहाँ पे सेव करोगे? डॉकर हब के अंदर. लाइक कि यू क्रिएट लाइक इंजन एक्स है, या आपने गिट का एक बना रखा है, या इधर यू यूज जेंकिन और इधर यू यूज एनी वेब सर्वर. So these all images are available. So when you create any container, अगर आप कोई भी container deploy करते हो, when you create any container, तो अगर आप कोई भी container बनाते हो डॉकर पे, when you create a container, अगर आप कोई भी container deploy करते हो डॉकर इंजन पे, so डॉकर इंजन क्या करेगा? डॉकर इंजन pull image from docker hub and save image in a कंटेनर सिस्टम. वो क्या करेगा? पहले इमेज को डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद उस इमेज को क्या कर लेगा? यहां पर सेव कर देगा. गॉट इट? लाइक अगर आप उबंटू की कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? उबंटू, या मैं कहता हूं इंजन एक्स की कर रहे हो, या आप उबंटू का कंटेनर बना रहे हो, या आप एनी अदर कोई अदर कंटेनर बना रहे हो, तो क्या करेगा? सबसे पहले वो इमेज को क्या करेगा? डाउनलोड करेगा और देन क्रिएट करेगा कंटेनर. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनर के अंदर जो ओएस होगा, कंटेनर की कंटेनर जैसी इमेज से बनेगा. लाइक आप विंडोज में इमेज डालते हो, विंडोज 7 क्या इमेज ही तो है. इसी तरीके से डॉकर की भी अपनी इमेजेस होती है. आप विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हो तो वो इमेज ही तो है, विंडो 10 की इमेज. तो सेम द उबंटू हो गया, इंजन एक्स हो गया, या एनी अदर कोई भी कंटेनर आप बनाएंगे, तो वो क्या करेगा कि कंटेनर अपने लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने लिए जो सॉफ्टवेयर फैच करेगा, वो कहां से फैच करेगा? डॉकर हब पे. तो कंटेनर दो तरीके से फैच करता है. या तो वो डॉकर हब से लाएगा, और अगर इमेज ऑलरेडी है आपके पास तो वो डायरेक्ट यहीं से बनेगा. लाइक सिंपली when image is available in a docker engine, it's not download the pull image from docker hub. If image already exists in docker engine,
it's not pull image from Docker Hub. गॉट इट? अगर ऑलरेडी आपके पास इमेज है डॉकर इंजन के सिस्टम पे, तो वो फिर इमेज को पुल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसी इमेज के थ्रू ही क्या कर देगा, आपका कंटेनर क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर यहां पर इमेज नहीं है, देन वो इमेज को क्या करेगा, पहले डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम पे और देन क्रिएट अ कंटेनर। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? So you can use a customize in a Docker Hub. The Docker Hub, it is a repository save custom image deploy by and create sorry and image create by developer। जो कि इमेज किसने करी है, एक रेपोजिटरी है, ठीक है, जो कि आपके सेव करती है कस्टम इमेजेस को, और ये इमेजेस कौन क्रिएट करता है, क्रिएट बाय द डेवलपर। लाइक आपने कहा कि मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए जिसके अंदर उबंटू का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लाइक उबंटू के सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर मेरा अपाची टॉमकैट भी इंस्टॉल होना चाहिए, मेरा एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल होना चाहिए, मेरा लाइक वेबसाइट भी होनी चाहिए। तो डेवलपर क्या करेंगे, इस टाइप की इमेज बनाएंगे। वो क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, कोड के थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज बना के यहाँ पे सेव कर देंगे। और नाउ अब मैं इस इमेज के थ्रू जब कंटेनर बनाऊंगा, सो ऑलरेडी उस कंटेनर के अंदर ही सारी चीजें मेरे को इनबिल्ट मिल जाएंगी। गॉट इन माय पॉइंट? एवरीवन गॉट इट? अशफाक, कुमार, Yes, sir. राकेश, आदित्य? Yes, sir. So now the how to create a Docker Hub account is simply you can just go to the Google and login is a hub.docker.com and sign up the account. Give the Docker ID. So already you have account. तो साइन इन करना है, बट हमें साइन अप करना है। सो आई एम जस्ट क्लिक डॉकर आईडी, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो क्रिएट अ डॉकर आईडी। सो आप डॉकर आईडी में लाइक आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। डॉकर आईडी में लुक लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ AMIT अमित, DOCKER डॉकर REPO रेपो। So I'm just give the name is Amit Docker repo. Give the name of Amit, email ID. तो गाइस में एक स्टूडेंट है उसके नाम से, तो अमित डॉकर रेपो, दिस इज अ डॉकर रेपोजिटरी नेम, this is a mail ID of Amit, then give the password, guys, and put the username and the password, and I agree and I am not a robot। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द ट्रैफिक लाइट, तो ये एक ट्रैफिक लाइट है, ये एक ट्रैफिक लाइट है, दिस वन ट्रैफिक लाइट एंड वेरीफाई। नाउ साइन अप। So guys, when you sign up, there the one verification mail go in a mail ID, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका ऑप्शन आ रहा है कि आप पर्सनल अकाउंट लेना चाहते हैं, तो 0, कंटिन्यू विथ फ्री, और इधर आप पेड अकाउंट लेना चाहते हैं डॉकर हब का, तो वो आप ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ फ्री। सो यहाँ पर गाइस हमने वो रेपोजिटरी क्रिएट कर दी, ये मेरी ऑलरेडी रेपोजिटरी, आई एम जस्ट लॉग आउट विद दिस रेपोजिटरी। और अभी हमने एक रेपोजिटरी क्रिएट करी थी विद द नेम ऑफ
Amit के. So Amit, please confirm the repository. So I'm just click on sign in and मैंने अमित की repository का जो नाम दिया था, this is called a docker ID जिसको मैं बोल रहा था. So AMIT Amit DOCKER docker REPO repo, इसी नाम से मैंने बनाई थी. और इधर आप मेल आईडी भी यूज कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, गिव द पासवर्ड ऑफ repository and continue. So guys, I'm logged in with Amit repository. तो देखिए Amit repo is available now. कि ये repository, अब आपको अगर यहाँ पे images है तो यहाँ पर क्या है कि जब आप image करेंगे तो public है या private है. तो लाइक कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी इमेज करनी है, लाइक उबंटू का आपको कंटेनर बनाना है, तो यू कैन सर्च UBUNTU उबंटू. तो ये आपकी डिफॉल्ट है. दीज आर द पब्लिक रेपोजिटरी. सारी इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो भी आप सर्च करेंगे. बट अभी हमने अपनी कोई बनाई नहीं है. अगर जब हम अपनी बनाएंगे तब मैं क्या करूंगा, अमित की रेपो के अंदर सेव करूंगा. दिस इज अ डॉकर रेपोजिटरी. तो डॉकर के हब पर डिफॉल्ट इमेजेस पड़ी हुई है. बट अगर आप अपनी इमेज बनाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है कि आप उसको पब्लिकली प्लेस करेंगे तो कोई भी आपकी इमेज को यूज कर सकता है. लेकिन अगर आप उसको प्राइवेटली सेव करेंगे तो होगा जो हम आगे बनाएंगे. Got it everyone? How to create a Docker Hub account? Is it Yes, clear? sir. राकेश क्लियर है? आदित्य क्लियर है? Yes, sir. Now, Yes, sir. now the next point is कि अब हमें बनाना है कंटेनर. How to create container? But guys, container के लिए I'm already told you कि when you create a container, the container created with the help of Docker engine. Got it my point? So now I'm create a one virtual machine in the cloud, then install a Docker engine, and then create a container. So now नहीं, जब हम when you create a container, the Docker engine pull custom image from Docker Hub and save in Docker engine machine and create a container. If image is already exit in Docker engine, it's not pull image Docker Hub from Docker Hub and create a container. Guys, यानी कि image होगी तभी ही container आपका बनेगा. Remember? So अगर आपके पास इमेज नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इमेज को पुल करके लेके आ जाएगा. या दो ऑप्शन है, या तो आप पुल करके पहले रख लीजिए, यू कैन पुल इमेज फ्रॉम डॉकर हब बिफोर देन क्रिएट अ कंटेनर, या आइदर you directly create a container, it automatically pull and save the image. So now guys, I'm just log in with portal and create a one Docker engine server. So I'm just log in with portal and Docker किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं इन प्रीवियस लेक्चर मैं आप लोगों को बता चुका हूं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उबंटू पे या आपका रेडिट पे या आपका Amazon लिनक्स पे किसी भी सिस्टम पे आप अपना डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो. सो अमित प्लीज नोट डाउन अपने आईडी और पासवर्ड डॉकर ऐप का, ठीक है. एंड नाउ द पासवर्ड इज ऐसे. वैसे जरूरी भी नहीं है लिखना, वीडियो देख लेना. Now I'm just create a one server. I'm just click on the launch instance. Amazon Linux. I'm using Amazon Linux. Give the name of Docker engine. Then next, select the security group, review, and then select the key pair, and then launch instance. And view instance. When you launch, when you create an instance, so what is the next key? First, you create a virtual machine.
create a VM or instance, Linux instance. Then login with instance. Via putty. Got it? The provide login credentials such as username and key pair. Got it? Then your user is login with a normal user. The dollar is always represented as a normal user. Now type the command is sudo su hyphen, then normal user to switch admin user, then type yum update hyphen y. First of all, I am just update my repository. Then I am install a docker yum instll install docker hyphen y. When you install a docker, after install docker, you can restart the docker service. So service docker status. First to check the status of the docker service. So you can see it shows your docker service is inactive. Now you can start the docker service. You can type the command service docker start. Then if you can see the docker version, you can type the command docker -v for version. If you check all detailed information of version, docker -hyphen version. If you need a more detail regarding docker, you can type the command docker info. So this is a command of docker, like docker v for display the docker version. Docker -v is also check the state docker version with more details, and info is it provide the complete details in which server it deploy, what is the version, or each and everything. So these are the some important commands is available. Now if you see the how many images is available in this machine, you can type the command docker images images. If you can see the how many container is running in this machine, so you can type the command docker ps. The ps command it show only running container. It show only running container. But if you can type a command docker ps space -a, it show the all container. It show the all container. All container means either is running or either is stop. Got it everyone? Is it clear? Sir. When you pull image, अगर आपको कोई image pull करनी है, so you can type the command docker pull or give the image name ubuntu. So when you type this command docker pull ubuntu, so it's already go the request docker engine to the docker hub, and it search the ubuntu image and download this image in your system. But if you can create a container, you can just simply write the command docker run space -it initialize terminal. Then it का मतलब है कि when you create a container, it's login with container also. तो ये login भी हो जाएगा. Then hyphen name of the container. So like I'm just create a ubuntu container, I'm give the name ubuntu -con1. Then hyphen image image. और आपको क्या देना है? इमेज का नेम, कि आप इस कंटेनर के अंदर कौन सी इमेज एड ऑन करना चाहते हो. So like I'm just pull image in a ubuntu, so I'm just type the ubuntu ubuntu. So you can see that it's create a container, but if you can see more thing ki like
there's a no any image is available, you can directly create a docker docker run run hyphen I hyphen d. तो d is the daemon service, आपका कंटेनर रन हो जाएगा बट लॉगिन नहीं करेगा आप. Now the hyphen name, like I'm just create one container name is like at this time I'm just create a nginx container, nginx nginx hyphen con1 and give the image name. So either you use hyphen image command then image name, या direct you can put the image name. Got it? अब क्या होगा, in this command if download the image then create a container. मैंने जो कंटेनर 1 बनाया था उबंटू का, द कंटेनर 1 में क्या करा था, मैंने पहले इमेज डाउनलोड करी थी देन कंटेनर. उस केस में क्या होगा, द डॉकर इंजन डोंट सेंड द रिक्वेस्ट टू डॉकर अप, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इमेज है तो डॉकर अप पे आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी. लेकिन जब मैंने कंटेनर 2 बनाया है इंजन एक्स का, तो उस समय मेरे पास कोई इमेज ही नहीं है. तो अब वो क्या करेगा, पहले इंजन एक्स की इमेज को डाउनलोड करेगा देन क्रिएट अ कंटेनर. लाइक अगर आपको कोई भी कंटेनर स्टार्ट करना है, यू कैन टाइप द कमांड docker stop stop or give the container id like asd123. this is a container id. give the container id और नेम. आप कंटेनर आईडी भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं. तो दिस इज अ कंटेनर आईडी और नेम. आप कुछ भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो. अगर आपको कोई भी कंटेनर क्या करना है, स्टॉप करना है. अगर आपको कोई भी कंटेनर से स्टार्ट करना है, यू कैन टाइप द कमांड docker strt start और गिव द कंटेनर आईडी. और अगर आपको कंटेनर से लॉगिन होना है, लाइक कंटेनर के अंदर जाके आपको कोई काम करना है, तो यू कैन टाइप द कमांड docker attach and then container id. एक तो गाइस ये कमांड है लॉगिन विद कंटेनर, एंड वन मोर कमांड इज अवेलेबल अगर ये कमांड नहीं चलती है कभी कभार. तो दिस इज ओल्ड. तो docker execute hyphen it, give the container name or container id. got it? So the container name, like I'm just login with ubuntu, I'm just type the ubuntu hyphen con1, give the container name. So then hyphen slash bin slash bash. Now enter, you can see your container is login, you login with container. So now I'm just start these all practical. ओके, सो कमांड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि क्या कमांड्स क्या हम करने वाले हैं. तो ये सारी चीजें हम अभी करने वाले हैं, देन हम स्टार्ट द प्रैक्टिकल. गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर गाइस? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so now I'm just login with docker engine. I'm just copy. तो सेम जो प्रोसेस मैंने वहां पे लिखा है उसी प्रोसेस से हम चल रहे हैं. एंड आई एम जस्ट login with ec2 hyphen user is my default username of Amazon, and now I'm select the key pair. And now open, and now click OK. I'm just login with docker engine. So this is rename. I'm just give the name of this machine is docker engine engine. Now I'm increase the font size. I think so it's visible to you everyone. Clear? Now sudo hyphen then sudo
yum update -y. I'm update the repository. Then yum install docker -y. So guys, same commands I'm implement one by one. So yum install docker -y. I'm install a docker. Then you can check the service docker status. You can check the status. Your service is inactive mode. Now I'm just start the service docker start start. And now again I'm check the status. You can see the service is inactive. Guys, sequence में यही commands में type कर रहा हूँ. After that I'm just click clear. Now type the command docker -v for version. The 20.10.7 is version is running, like docker -- version. It shows the detailed information. This is a version, API version, Go, Wednesday, Linux, default, true. So these are the detail. If you can type the same command, one more command is available, info. So you can see the detail. So all are the monitoring commands. Now the clear. Then if you can see the how many images available, I'm type the command docker images images. There's no any images available right now. If I'm type the docker ps, there's no any running container is available. If I'm type the docker ps -a, there's no any stop container running container is available. So these three command is represent like the docker images, it show the all images. Docker ps command is show the running containers, and docker ps -a is show the all types of container, either is running or either is stopped. Now the clear, I'm just pull the image. There is no any images available. How to pull image? Like a docker pull, or like you create like a nginx, so you can type like a ubuntu, so ubuntu ubuntu. You can see this, it's pull the image automatically in a docker hub. Or either you can pull any other image, you can just go to docker hub, you can search in docker hub. Hub.docker, or like you can pull a image like a Jenkins. So either you create a Jenkins, so you can search Jenkins Jenkins. So you can see the Jenkins image name is Jenkins. So now you can pull a image, Jenkins image, you can pull a Jenkins image, you can type a command docker pull. Just pull the Jenkins image also. Like you can just click on this image, it show the command docker pull Jenkins. So it give the detail. Got it, everyone? Yes, Guys, sir. is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Then next, okay, the manifest error, so it's not right name of the Jenkins image, so you can use a different name. Is it this name, the Jenkins/Jenkins its? So I'm using this name. So Jenkins/Jenkins its, this one. So old command thi guys, so this is the latest one, so I'm just type this command. Now enter. So guys, you can see I'm just pull out two images. I'm pull out one image is Ubuntu and second image in Jenkins.
गाइस डॉकर स्टार्ट हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे आपको, आपके पास 1 वीक ही होता है, तो काफी सारी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर है, तो प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करनी पड़ेंगी. नाउ द क्लियर, इफ आई एम जस्ट टाइप द DOCKER डॉकर IMAGES images, so how many image download pull from docker up 2, so it show the both images, the Jenkins image and Ubuntu images. Now you can create a container, is simply type a container name is DOCKER docker run run hyphen I hyphen D space hyphen hyphen name. Name of container is ubuntu ubuntu hyphen con1. You give the any name, give the image name hyphen hyphen image image, or give the image name is ubuntu ubuntu. So now image command is not accept, so I'm just type the ubuntu. Now you can see it's create a container. But if you can type the container like DOCKER docker PS command, so that means your one container is running before 9 seconds. But if you can type a docker PS hyphen A, it show the, because the docker PS show the all containers. I'm clear. Then I'm type DOCKER docker PS. And now if you can stop this container, you can type the command DOCKER docker stop stop and give the either a docker container name, or either you can put a docker id, and put the docker id and click. Now you can see the docker ps command, it's not show any container, because the docker ps command is show only on running container. But you can check the docker ps hyphen a, it show the all types of container, either running or either stop. So now the status is exited, that means that this container is stop. How to start or how to log in with container is simply DOCKER docker, and before starting container, I'm explain you कि I'm create a Amazon Linux. You know, I'm install a Docker engine in Amazon Linux. Now you can see the my OS detail. I'm type the command cat /etc/os release. You can see the my image type is Linux, Amazon Linux. Got it, guys? Now clear. Now I'm type the command docker ps. There's no any container is available. Docker ps, there's the one stop container is available. But I'm create a container of which operating system? Ubuntu. My base machine user Amazon Linux, or my container running in Ubuntu. So I'm just log in with Ubuntu and check the image, so you can see the Ubuntu server is running. So now how to start container? First of all, DOCKER docker start start, or give the container ID. Then again I'm check the PS, it's up to 3 seconds. So first exited, then now up to 3 seconds also show in a PS command. My container is started, but how to log in with container? There are the two commands. One is DOCKER docker attach, and give the container name or ID. At this time I'm put the name. Wait guys, wait. हाँ, फिर if you log in a Ubuntu container, so Ubuntu apt वाली कमांड चलेंगी फिर. Now guys control C, so मैंने आपको पहले बताया था कि कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करती है कमांड, so I'm just open a duplicate tab. So उसने मेरा कंसोल बिजी कर दिया, sudo su hyphen. Now the DOCKER docker ps, this is my running container is available, and like is a running container is available now.
and just type the clear command and again type the docker ps. And now guys I'm just मैंने एक और command बताई थी execute वाली. So docker docker exec execute -it and give the container name or either a container id and space /bin/bash. Now I'm just login with container. Or at this time, this container is Ubuntu. So if you can type the yum update -y, this command is not working. But Ubuntu, the command is work apt-get update -y. Sorry, first apt-get in operation. Wait, apt-get get. Now you can see the update command actually. Now I'm install a git or you can just create a setup of git. आप इसको git के लिए कोई वर्चुअल मशीन बनाने की होती है, आप इस पे अपना git का पूरा सेटअप बना सकते हो. Complete. It's work as a your virtual machines. Got it my points? हम लोगों ने git पढ़ चुके हैं. Now apt get install inst install git -y. I'm install a git. अब मैंने git कहां पे इंस्टॉल करा है? कंटेनर पे git इंस्टॉल करा है. Now mkdir like amit -repo repo and like cd amit repo and now git init and now the I'm create a one file touch touch file file1 and git status. Got it guys? Everyone got it the point? Yes, sir. Now अब आपको git पे Yes, sir. काम करना है git करिए, आपको jenkins इंस्टॉल करना है jenkins करिए, आपको SQL का अलग कंटेनर बनाना है, so आपको different वर्चुअल मशीन बनाने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने एक हायर कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर ले रखा है तो वी हैव डिप्लॉय अ मल्टीपल रिसोर्स मल्टी इन अ सिंगल मशीन. Now if you can type the cat /etc is a configuration directory, the all configuration file save on a etc directory of Linux and now the OS release. Now you can check at this time name is Ubuntu. Now if you can exit with the container, you can tap the command exit exit command. Now you can exit this command, you can see the PS, your container is running on. How to delete image and how to delete a container is a simply, first of all, you can stop the container. So like docker stop stop and give the container name or either ID. कौन बना रहा? Then docker निखत क्यों आ रहा? निखत कौन बुलाया? तो बुलाया है, फोन किया मुझे उसने. then docker delete and give the again container ID. So wait, sorry, docker not in delete is rm command, I think so. Use wait, docker rm, yeah. So rm command use, or like you can check the docker ps-a. There's no any container is available. Guys, you remember if your container is available, you cannot delete the image. अगर आपकी इमेज किसी भी कंटेनर के साथ रिसोर्स के साथ अटैच्ड है तो आपकी इमेज भी डिलीट नहीं होगी. So because क्योंकि if you create a 10 server in a Ubuntu 10 containers, so you can
create a single image से आप 10 containers बना सकते हो. तो वो इमेज परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, वो माउंटेड इमेज रहती है, यानी कि शेयरेबल होती है. Now you can see the docker docker image image, sorry, images. So now these are the two images is available. Now how to delete image? docker rmimag docker rmimage image, or give the image id or name. So it maybe it's give the error. Yeah, it's give the error. So the command is images. No, docker. Wait, guys, I'm just forget the command. The how to delete image is docker delete docker images hyphen rm. No, what is the command? Yeah, so this is a command, docker image rm. So now just click on clear clear, and now docker images images. You can see the one image is delete the Jenkins. Now I'm delete this image. Command is docker image rm, or rm की जगह you can put the this image. I'm delete this image. Right click and the paste, and now delete. You can see docker images images. So now the how to install Docker, how to start services of Docker, how to pull image, how to create a container, how to start container, how to stop container, how to delete container, how to log in with container. Everyone got it, this all information? Yes, sir. So Yes, sir. thank you. So first of all, Yes, info sir. for today,